Namaskar, namaskar, namaskar. I am Pradeep Nambiar. Welcome to Nation Now. Today was a fine day. As they say, in every system there has to be a congruence between the way people make wealth and the way they govern themselves. If the political and the economic systems are dissimilar, one will eventually destroy the other. The four pillars of our democracy, the four pillars of our constitution, justice, equality, liberty and fraternity, is not complete until we include the poorest of poor into our daily lives, into our daily ways of governance. Today we are talking about how Narendra Modi ji Mumbai पधारे और 40,000 करोड़ के बजट इंप्लीमेंट करने के लिए पूरे प्लान्स का शिलान्यास किया. 40,000 crores, that's what Mr. Modi has planned for Mumbai. मोदी जी चाहता है कि मुंबई एक जबरदस्त सिटी बने, an international city of repute. लोग चर्चा करें तो मुंबई का ढंग से चर्चा करें. इंफ्रास्ट्रक्चर, खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो लाइंस एवरीवेयर. पर्यावरण का उतना ही ख्याल रखेंगे जितना हम लोग डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे, सोचेंगे और डेवलपमेंट करेंगे. हॉस्पिटल्स बनेगा, खूबसूरत हॉस्पिटल्स विल बी देयर. You're talking about infrastructure, you're talking about flyovers, you're talking about metro lines, you're talking about also at the same time sewage treatment plants. ये भी है कि जो प्रदूषण है उसको कंट्रोल करना है, सीवेज को कंट्रोल करना है. हर चीज, everything to make Mumbai an absolute great mega city. Narendra Modi, our Prime Minister, was here, inaugurated the metro lines, the 3 hospitals, 7 STP plants, BKC में जबरदस्त एक huge rally. What more can Mumbai and Maharashtra ask for? Mumbai and Maharashtra is on probably for the BMC elections. Mumbai is on for the BMC elections. BMC elections का actual bugle आज नरेंद्र मोदी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ब्लो किया है. Mumbai BMC elections could be any time round the corner. Look at what all he has done. We have got 14 metro lines. Mumbai is bursting with activities. Mumbai में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के कार्यक्रम प्लान किया गया है, it's absolutely astounding. We are even thinking about the environment. प्रदूषण, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए. Look at 7 STPs that he talked about, sewage treatment plants, जो सालों साल डिस्कशन हो रहा, बात लोगों कर रहे हैं. People talking about it's going to come, अभी आ रहे हैं, कभी आ रहे हैं. आज के तारीख में this double engine सरकार जो मोदी साहब कह रहे हैं, आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये भी कहा कि ये डबल इंजन सरकार फिर वो महाराष्ट्र में आ गया है, तो जो प्रगति का गति, डेवलपमेंट का गति एकदम फास्ट मोड में है. It's on the fast track. Development is on the fast track. That is what Mr. Modi says. He has not left any stone undone. All the party workers जिस प्रकार आज BKC की तरफ मुड़ गए थे, BKC बिल्कुल हमारे ऑफिस के बगल, पूरे दृश्य हमारे ऑफिस से दिख रहा था. जिस प्रकार लोगों की जो संख्या, जनसंख्या जिस प्रकार से जबरदस्त उमड़ा था, बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, पूरे बीजेपी के झंडे, एक नाथ शिंदे शिवसेना के झंडे, सभी तरफ भरपूर भरा हुआ बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के मैदान. यहां पर 40,000 करोड़ के 40,000 करोड़ के जो बजट, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्लान्स इंप्लीमेंट, लोकार्पण सब जिस प्रकार से किया गया. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट फॉर मुंबई एंड महाराष्ट्र. BMC definitely elections around the corner, but the most important thing that we talked about है जो छोटे छोटे उद्योग को प्रमोट करने के लिए जिस प्रकार से मोदी जी ने कदम उठाए कि लो इंटरेस्ट में लोन्स दिया जाए. हॉकर्स है, फेरी वाले हैं, इस चीज का सब लोग ने सराहा है. इट्स अ फैंटास्टिक वर्क, इट्स अ फैंटास्टिक वर्क, बिकॉज जो दबे पीछे डाउन ट्रॉडन पोर एंड डाउन ट्रॉडन को आप अपने साथ लेना पड़ेगा. तब तक ये डेमोक्रेसी विल बी अचीव्ड इन इट्स फुल, इन लेटर एंड स्पिरिट. As the constitution says, everything should be implemented in the letter and spirit. We have a huge plan. This prakar se 7 STPs that we are talking about. 14 metro lines will transform Mumbai. 400 kilometers concretization of road. Who's ready? Loans for small businesses. We have Balchandra Shirshad ji hamare saath hai. Is he on? बालचंद्र शिरसाट जी, नमस्कार.
Balchandra Shirshar ji, welcome to Nation Now. Today is a fantastic day, Balchandra ji. यहाँ हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर हमारे ऑफिस बिल्कुल बेंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, यहां से वो दृश्य दिख रहा था, पूरे बीकेसी भरा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे शिवसेना के कार्यकर्ता से भरे हुए। 1 इंच जगह आपको खाली नहीं मिलेगा, इतने भरा हुआ था। लोग पूरा प्रेरणा लेकर आए कि 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जिस प्रकार से मुंबई में आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंप्लीमेंट और इनॉग्रेशन किस प्रकार से किया। बालचंद्र जी, क्या हम समझ सकते हैं कि बीएमसी इलेक्शंस का ब्यूगल मोदी जी ने आज ब्लो किया है? क्या लगता है आपको? इलेक्शंस और आज का कार्यक्रम, इसका कोई संबंध नहीं है। जहां तक ये जो सब प्रोजेक्ट्स है, ये कोई नए प्रोजेक्ट्स नहीं है जो 2 मास से मुख्यमंत्री जी ने लाए और मुंबई को दिए। ये जुना काम है जो पहले से होना चाहिए था, इतने सालों से नहीं हुआ। जैसा कि मेट्रो 2A, मेट्रो 7, इनका काम देवेंद्र फडणवीस जी ने शुरू किया था। उसमें रुकावट उद्धव सरकार ने लाई थी, रुकावट के कारण देरी हुई। यह नया सरकार आने के बाद, यह डबल इंजन का सरकार आने के बाद, मोदी जी के आदर्शों पे चलने वाले और बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधारा को मानने वाला यह सरकार है। इन्होंने तुरंत मेट्रो के 2, मेट्रो 2A, मेट्रो 7 चालू किया। मेट्रो 3 आने वाले कुछ महीनों में चालू हो रही है। तो मुंबई शहर में मेट्रो का पूरा जाल फैलेगा। उसी के साथ साथ अलग अलग वर्षों में, पिछले 25 वर्षों में शिवसेना ने हर साल 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, शिवसेना उद्धव ठाकरे की सोच ही उतनी है। जितनी सोच उतनी कृति होती है। इतनी छोटी सोच रखने वाले उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना ने इस 25 साल में 950 किलोमीटर रास्ते किए और आज एक ही वर्ष में 400 किलोमीटर रास्ते का उद्घाटन किया है। 6,000 करोड़ बड़ी राशि है, लेकिन हमको ये निकालनी पड़ेगी। अगर नहीं निकालेंगे तो यही पैसा दूसरे रास्ते से कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएगा, जो रास्ते बनाएंगे, खड्डे होंगे, फिर रास्ते खड्डे बुझाएंगे, रास्ते बनाएंगे। इसके लिए एक बहुत बड़ा ऋण इस मुंबई शहर का भारतीय जनता पार्टी पे है, इस सरकार पे है। इस ऋण को मान्य करने के लिए जो 7 STP है, 2016 से इसकी प्रक्रिया शुरू है। उद्धव बाला साहेब ठाकरे महापालिका में थे, राज्य में थे, कुछ नहीं किया, सिर्फ टेंडर निकाला। 4-4, 5-5 बार टेंडर निकाला। टेंडर फाइनलाइज क्यों नहीं हुआ? क्या टेंडर और बिडर्स उनको मिले नहीं? क्या उनका हिसाब किताब बराबर सा हुआ नहीं? और इस सरकार आने के बाद तुरंत ही 4 महीने में ये भी टेंडर निकाले गए। 20 दवाखाना, आरोग्य की सेवा आज गरीब आदमी के लिए बहुत महत्व की है। महानगर पालिका का दवाखाना सुबह 9 बजे खुलता है, 4 बजे बंद होता है। जब मुंबई का श्रमिक आदमी काम पे जाएगा और रात को 8 बजे आएगा, 9 बजे आएगा, 10 बजे आएगा। ये आपला दवाखाना हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के नाम से शुरू हुआ है। उनका दिल बड़ा था, उनके दरवाजे 24 घंटे शिवसैनिकों के लिए खुले थे, जनता के लिए खुले थे। यह दवाखाना सुबह 7 बजे से रात को 11 बजे तक खुला रहेगा। तो काम करके आने के बाद भी आप दवाखाने में जाकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। फेरी वालों के लिए योजना, यह सब आवश्यक है। एक्चुअली ये कोविड काल में होना चाहिए था। ये PM स्वनिधि योजना मुंबई महानगर पालिका चुनाव के लिए नहीं आई है। ये योजना कोविड काल में आई है, लेकिन कोविड काल में यहाँ पर बैठे हुए एक नाग रहता है, स्नेक जैसे महाविकास आघाड़ी के उद्धव सरकार ने इस योजना को लागू नहीं किया। जो काम अब हुआ और 1,15,000 लोगों को PM स्वनिधि योजना का फायदा हुआ। ऐसे बहुत सारे काम है जो आवश्यक है। पहले से केंद्र की योजना है, STP के लिए भी योजना है, लेकिन पिछले सरकार ने किया नहीं। महापालिका में शिवसेना सरकार ने किया नहीं। आज वो हो रहा है। इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है।
बालचंद्र शीर्षण जी, डेवलपमेंट जबरदस्त हो रहा है। क्या आज के जो 40,000 करोड़ को जो आज इंप्लीमेंटेशन और इनॉग्रेशन मोदी जी ने किया है, डज इट कॉम्पेंसेट होता है ये सैफरन, टाटा एयरबस, फॉक्सकॉन, मैजिकल ड्रग पार्क, मैजिकल मेडिकल पार्क, ये सबका ये ऑपोजिशन है, स्पेशली आदित्य ठाकरे और सबका कहना है, क्या ये कॉम्पेंसेट हुआ? नहीं, आई डोंट थिंक सो। Creating a jobs, creating a employment is a different era. This is infrastructure facility. This is not going to create employment for Mumbai city to that large scale. So a 400 kilometer CC roads are required for normal Mumbaikar to travel on the road. Pothole free roads पे चलने के लिए उनको आवश्यक है। 7 STP समुद्र के प्रदूषण को रोकने के लिए और शुद्ध हवा को लेने के लिए आवश्यक है। हॉस्पिटल्स आरोग्य के लिए आवश्यक है, दवाखाना आरोग्य के लिए आवश्यक है, स्वनिधि योजना फेरी वालों के लिए, जीवित के लिए आवश्यक है। जो फॉक्सकॉन है और अलग अलग है, उसके वो जो प्रकल्प गए, जिसका दोष उद्धव बाला साहेब ठाकरे और उनका बेटा आदित्य दे रहा है, मैं कहता हूं वो उनके कारण गए। उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, उनका कमीशन फिक्स नहीं हो पाया, उनको परसेंटेज जो चाहिए था वो कंपनी नहीं दे रही थी। आज चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी दोवास में जाकर 2 दिन में, सिर्फ 2 दिन में 1,55,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लेकर आए, उससे एम्प्लॉयमेंट शुरू होगा। सो आज के प्रोजेक्ट से इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ेगा तब निश्चित रूप से और उद्योग आएंगे। इससे महानगर पालिका चुनाव या जो गए हुए प्रोजेक्ट है उसका कोई मतलब नहीं है। बालचंद्र जी, कुछ दिन पहले आदित्य ठाकरे ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए थे। एक में उन्होंने कहा कि एसटीपी कहां पर है, एसटीपी का इनॉग्रेशन दिसंबर 2022 में होना था। उन्होंने कहा एकनाथ शिंदे देव फडणवीस डेवलपमेंट में पीछे। उन्होंने कहा डीसैलिनेशन प्लांट अप्रैल मिड 2023 में होना चाहिए था। डीसैलिनेशन प्लांट का कुछ अता पता नहीं है। 400 किलोमीटर जो कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ रोड्स है, बोले इसमें करप्शन से ग्रसित है। कॉन्ट्रैक्टर कौन है पता नहीं है, कार्टेलाइजेशन हो रहा है, और इतने 4 साल के प्रोजेक्ट आप कितने बोले कि कैसे आप कंप्लीट करोगे, टाइम फ्रेम आपने नहीं दिया। तो इसको आप कैसे देखते हैं बालचंद्र जी? आदित्य ठाकरे जी की सोच उनके पिता श्री उद्धव ठाकरे जैसी ही छोटी है। जो 25-30 किलोमीटर के सही रास्ते नहीं कर पाए, अचानक 400 किलोमीटर कैसे कर पाएंगे, ये प्रश्न उनके मन में आना स्वाभाविक है। लेकिन उनको यह मालूम नहीं, मोदी है तो मुमकिन है। ये स्लोगन आपने सुना ही रहेगा, मोदी है तो मुमकिन है। और मोदी जी से प्रेरणा लेकर काम करने वाले एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी है तो ये मुमकिन है। उद्धव बाला साहेब ठाकरे मोदी जी के साथ 5 साल थे 2014 से 19 में, लेकिन उनसे प्रेरणा नहीं ली, ऊर्जा नहीं ली। उधर अगर प्रेरणा लेते, ऊर्जा लेते, तो जिस प्रकार से महाराष्ट्र राज्य सरकार में प्रोजेक्ट्स है वैसे महापालिका में आ जाते। कोस्टल रोड एक प्रोजेक्ट चालू किया, आज उसको 10 साल पूरे हुए, आज भी कोस्टल रोड पूरा नहीं हुआ है। तो जिन्होंने कभी जिंदगी में कोई प्रकल्प को पूर्ण नहीं किया, रास्ते पे खड्डे ही देखे, उनके लिए प्रश्न आने वाले हैं कि भाई एक साथ एक काम कैसा हो सकता है। दिसंबर में एसटीपी का उद्घाटन था, जनवरी में हो रहा है, सिर्फ 30 दिन का डिले है उद्घाटन में। काम तो पहले से चालू हो गया। एक एसटीपी में फर्स्ट फेज है डिजाइन, डिजाइन तो पेपर पे करना पड़ता है, बाद में बिल्ड, देन ऑपरेट एंड देन ट्रांसफर। तो डिजाइनिंग का काम ऑलरेडी जो वर्क ऑर्डर दिया उसके बाद चालू हुआ है। आज उसका उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं और काम प्रत्यक्ष रूप से भी चालू होगा। I want to get Mr. Godfrey Pimenta. Godfrey Pimenta from Watchdog Foundation. Everything is so fine. For 40,000 करोड़ मोदी जी ने यहाँ पर आज इनॉग्रेशन किया। Godfrey, why is the opposition को क्या तकलीफ है? Mumbai and Maharashtra on the fast pace of development. एकनाथ शिंदे जी 1,40,000 करोड़ का बिजनेस डावोस से लेके आए हैं। आप देखो सब जगह तरक्की 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 है, फिर भी ऑपोजिशन को क्या तकलीफ है?
Godfrey Pimenta, what is wrong? What is wrong with the opposition and especially some NGOs? क्या तकलीफ है? बोलिए आप. Sir, I firstly welcome the decision of the central government led by the Prime Minister Honorable Modi ji that 40,000 crore is being spent on the development of Mumbai. Similarly, the Chief Minister has gone to Davos and signed some MOUs trying to get, it is a welcome decision. But ultimately, whatever is done, whether by the Prime Minister or by the Chief Minister, it has to be translated on the ground, sir. Today, what is happening? Whatever this STP project, sir, was conceived. If you see the development plan of 1991, there is a reservation for the lands at for STP. These lands were parceled during 90s, and subsequently in the BKC, all this new offices have come on the places of STP. Today, Mithi River, if that project was implemented in 1990s, the Mithi River would have been one of the cleanest river. Despite sending thousands of crores on cleaning, today we see that Mithi River is in the same status. Now, all this money which is being spent on the development of Mumbai is a very good sign. But ultimately, what is happening today, there is no central agency or a person, whether in the municipal commissioner who is today administrator after dissolution of the corporation, to take charge of the Mumbai city as the CEO. Today you will see there is a traffic jam everywhere. Illegally parked 2, 3 vehicles are parked on the 4 or 5 lanes, leaving barely 2 lanes for the traffic. Whatever you do to transform the city, whether you get 14 metros, 7 STPs and all that, ultimately it has to be translated on the ground for common man. Today the common man has no place in the city. You go to any of the metro stations, sir, all around encroachments. What are we doing to alleviate the sufferings of the common Mumbaikars? That is the question I have asking on behalf of the Mumbaikars. We welcome that 4,000 crore or 40,000 crore, whatever amount you are spending, has to go to the benefit of the common people. Hospitals, wherever you go today, hospitalization has become one of the costly affair. People cannot go. It is welcome that yes, more and more hospitals are there, but there has to be more hospitals looking at the population. Today the population is touching about 1.5 crore. How many new hospitals are there? How many crematoriums or cemeteries are being built? Whatever is there, all these civic amenities are lacking. We have to match those civic amenities. Now, to talk about open spaces in Mumbai, sir, for every single tree, there are 4 people. The world average is 28 trees. If you go to Delhi, the average is maybe 150. If you go to China, there are 8,000 trees per person, which is having the largest population. But here in Mumbai, we are cutting more and more and more trees in the name of development. Government has to consider that ultimately what is happening because of the environmental destruction, the heat is increasing. What are the plans for, there is a prediction that after 50 years, Mumbai will be underwater. What are we doing for that? The climate action plan. These are the immediate issues which I leave it to this panel to take a call on that. That is what is required. शिक्षक बालचंद्र जी, जैसे गॉडफ्री पिमेंटा कहता है कि इम्प्लीमेंटेशन एक सस्पेक्ट है. लोगों को लग रहा है कि प्लान बहुत जबरदस्त है. मोदी जी का प्लान एब्सोल्युटली फैंटास्टिक है फॉर द बेनिफिट ऑफ मुंबई. बट क्या बीजेपी उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगा? सालों साल इन्होंने देखा कि इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हो रहा है. रोड डीपी में है, रोड नहीं बना. ये बोलिए बालचंद्र जी. Yes, I fully agree with Mr. Godfrey, the gentleman who just suspected, because he has never seen development in Mumbai. He must have seen all the roads built this year and next year again potholes are on the same road. So this is his problem. There is no problem with him. He has experience, bad experience of municipal corporation, which was run by Shiva Sena for last 25 years and before that by Congress.
Now Shiva Sena Congress are together now in municipal corporation also, as well as in opposition also. So Shiva Sena has never implemented faithfully whatever development plan was there. In 1991, development plan STP came up. Since 96, continuously 25 years, Shiva Sena is there. At the end of 25th year also, they could not start the work of STP, which has been started now within last 5 months period, and that is awarded. Designing is going on. Actual construction and what you call installation of the plant will be done in next 2 years. 400 kilometers of roads will be concretized. They will not be done with mastic asphalt or any other asphalt technique, only because asphalt technique always gives rise to potholes next year due to heavy rains. That also will be addressed now, and 400 kilometer roads will be done within 1 year. So you have to just vouch for 1 year. That's a fantastic thing. Within 1 year, 400 kilometers रहेगा. That was what Aditya Thackeray was questioning. ये 4 साल लगेगा. Traffic police gives permission only 50 meters, 100 meters, 400. Exactly. What Aditya Thackeray says is perfectly correct. Hurdles are there. Traffic police obstruction है. उसके पास परमिशन मांगने को जाओ तो हफ्ता मांगती है. इतना पैसा दो तो कॉन्ट्रैक्टर को भेजो. सब ये आदित्य राज में था. मोदी है तो मुमकिन है. Mr. Godfrey Pimenta, मोदी है तो मुमकिन है. That is what बालचंद्र शिरसाट जी बोल रहे हैं. बालचंद्र शिरसाट जी जब भी बात करते हैं स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी का याद आता है, बिकॉज बहुत बड़ा मैनरिज्म्स आपका और मुंडे जी का मिलते हैं. शिरसाट जी, that's a compliment. Tell me, Godfrey, what's going to happen? Implementation is fine. It's just 1 year. 1 साल के अंदर आपका 400 किलोमीटर पूरा होगा. That's a great. I mean, it's fantastic. What a development are we talking about? Fantastic, absolutely fantastic. And here contractors for 400 kilometers are not routine contractors of Aditya Thackeray Group. All those blacklisted contractors are now taken out. Big contractor, big companies, international, national level highway work doing companies are participating. अभी participate करने वाले players हैं, वो बड़े हैं, वो commission नहीं देते हैं, कारण they are public limited और bigger companies, multinational companies, and इसके लिए उनको आने से रुकावट आदित्य ठाकरे ने रखी थी. इसके लिए आदित्य ठाकरे की जो सोच है, उस सोच में 30 किलोमीटर ही हो सकता है, 400 किलोमीटर नहीं हो सकता है. Godfrey Pimenta, what a fantastic. एक corruption. बालचंद्र जी ने 2-3 चीज बोले हैं. एक, the end of corruption. You're seeing a new development phase. Mumbai was the fast track of development. मोदी जी एकनाथ शिंदे जी को पहले ही बोला था कि एकनाथ जी आपको और देवेंद्र फडणवीस जी को मुंबई और महाराष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले जाना है, और एक के बाद एक लगातार गॉडफ्री जी हम यही देख रहे हैं. अभी जब बीजेपी का रोड मैप क्लियर है, बोलिए. Sir, today also, even though the municipal corporation is not in existence, the municipal commissioner has been appointed as the administrator. Today also substandard works are being carried out. The state government has to take a stock of the situation, because the footpaths, earlier good old days, the footpaths were made from the stone quarries, permanent nature. If you see in fort areas, sir, today footpaths which were there 100 years ago, they are still intact and having a user pedestrian friendly manner, still intact. Whereas what is happening year after year, every 2 years, the footpath work is being awarded. Today also under the garb of beautification work which is going on, the work is substandard nature. Every footpath has been occupied by the hawkers, so much so that the pedestrians have nowhere to go. Recently, the Mumbai High Court cast serious aspersions on the corporation to take a stock of the situation. I would ask my friend on this panel to look into this aspect to see that the Mumbaikars have a long-lasting, durable footpath, roads, and also have a designated space as per the national hawking policy, which is not being implemented for one reason or the other for so many years. First and foremost,
let the national hawking policy be implemented in Mumbai, so the hawkers are also have a decent living. They can earn their decent living in a designated spaces, and the pedestrians also get their right of way. बालचंद्र जी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मोदी जी ने आज जिस प्रकार से 1 लाख तक शायद लोन, बिजनेस लोन्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस, जिसमें उन्होंने क्लियर कट स्पेसिफाई किया था, हॉकर्स, रेडी वाले, फेरी वाले हैं, ये हमारे साथ रहे, हम आपको भी प्रगति की ओर लेके चलेंगे, हाथ में हाथ रख के हम साथ में चलेंगे। It's a great, fantastic decision by the Prime Minister and the state to see that small businesses are given funds for survival and to prosper. But then, बालचंद्र जी, जैसे गॉडफ्री कहता है, हॉकिंग पॉलिसी कहां है आपका? हॉकिंग पॉलिसी भी तो चाहिए। Hawking policy has to be finalized by the state government, and for all these years state government किसके हाथ में था आपको मालूम है? अब स्टेट गवर्नमेंट आया है, महानगर पालिका भी आने वाली महानगर पालिका के चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास ही आएगी। हॉकर्स, yes, there is nuisance due to hawkers, but hawkers is integral part of our society, integral part of Mumbai city, integral part of this country, and hawkers is integral part of worldwide. Any nation you go, there are hawkers. I have seen hawkers in France, I have seen hawkers in Singapore, I have seen hawkers in UK. Hawkers are everywhere, but they are regulated. Here they are not regulated, so nuisance is there. So they should be regulated. The garbage generated by the hawkers should be regulated, and that regulation has to be done by municipal corporation, which was never tried even in last 25 years by Shiva Sena, and Aditya Thackeray has never thought about it, and that is why this has happened. And if BJP comes in power in municipal corporation, or the BJP in the state, will definitely regulate hawkers. That is what is hawkers policy. Hawker policy does not mean drive away hawkers. Regulate hawkers, regulate hawking, regulate hawking hours, regulate garbage generated by hawkers, which will be done by the government. बालचंद्र जी, एक आपको पॉलिटिकल में बात कर रहे हैं, संजय राउत ने ये आज कहा कि मोदी जी ने हमारे प्रोजेक्ट्स पर सिक्का मोहर लगाया, ये सब हमारे प्रोजेक्ट्स है। कांग्रेस का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने कहा कि ये मेट्रो फेज जो है हमारे अर्लियर पास्ट प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने उद्घाटन किया, आज बीजेपी इज जस्ट कैरी फॉरवर्ड द लीगेसी। तो हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सबका कहना है कि ये हमारा प्रोजेक्ट था, ये आपने हाईजैक करके आपने कर दिया। बट घूम फिर के उनका कहना है कि मोदी जी जब आज इनॉग्रेशन कर रहे हैं, ही इज गिविंग अप्रूवल टू आवर डेवलपमेंट प्लान। हाउ डू यू सी, हाउ डज द बीजेपी सी दैट, बालचंद्र जी? ऐसा है, इस प्रश्न का उत्तर मैं दो तरीके से दे सकता हूं, एक मेरे भाषा में और एक संजय राउत की भाषा में। संजय राउत की भाषा में पहले उत्तर देता हूं, फिर बाद में मेरे भाषा में देता हूं। ये उनके बाप के प्रोजेक्ट है क्या? अगर उनके बाप के है तो अब तक क्यों उनके थे, अब तक क्यों नहीं किया? इफ इट इज देयर फादर्स प्रॉपर्टी, इफ दैट इज देयर कंसेप्ट, आदित्य ठाकरे का है, उद्धव ठाकरे का है, तो अब तक सोए थे क्या? एंड टू टेल यू द ट्रूथ, these things are on card for very long time, not only in Mumbai city. See, STP is there in Navi Mumbai. You go to Navi Mumbai and Thana. Navi Mumbai and Thana are smaller cities than Mumbai. STP is operational there. So if STP is operational in Navi Mumbai, it is operational in Kalyan, it is operational in Thana, why not in Mumbai? Who has stopped? ये किसी के बाप की प्रोजेक्ट्स नहीं है, ये कंसेप्ट पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए एसटीपी की आई, रास्ते को खड्डे मुक्त रखने के लिए सीमेंट कंक्रीट की आई, लोगों को आरोग्य की सुविधा देने के लिए दवाखाना हॉस्पिटल की आई। ये जो हॉस्पिटल का प्लॉट है सिद्धार्थ रुग्णालय इन गोरेगांव एंड भांडुप, ये प्लॉट 10 साल से खाली पड़ा है। संजय राउत तो भांडुप में रहते हैं, संजय राउत को पूछो 10 साल से आप भांडुप में रहते हैं, 10 साल से प्लॉट खाली पड़ा है, आपने क्यों नहीं उद्घाटन किया, क्यों नहीं चालू किया काम, क्यों नहीं हॉस्पिटल बनाया? और आज हमको पूछते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट है और मोदी जी अब काम होगा। मोदी है तो मुमकिन है, संजय राउत है तो नामुमकिन है। और बालचंद्र जी, संजय राउत तो बोल दिया, अब सुप्रिया सुले बोलने के लिए आई है कि
सुप्रिया सुले जी एनसीपी का कहता है कि इनको बीएमसी इलेक्शन भी मोदी जी को उतारना है, स्टेट असेंबली इलेक्शन में भी मोदी जी को उतारना है। अब नेशनल असेंबली तो मोदी जी तो आते ही है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, मगर चीफ मिनिस्टर और अभी मेयर भी तो ये कैसे देखते हो आप? बोले कि हर चीज में मोदी। ऐसा है सुप्रिया सुले का कहना है कि उनके पास दूसरा कोई नेता ही नहीं है, मोदी जी को हर जगह आना पड़ेगा। ऐसा है, सुप्रिया सुले जी का सम्मान रखते हुए मैं ये कहना पड़ेगा मुझे कि मोदी जी हमारे सर्वोच्च नेता है, भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता है। बाला साहेब की शिवसेना एकनाथ शिंदे जी ने भी उनको नेता माना है। उनके नेतृत्व में हम हमारा पार्टी चलाते हैं, सरकार चलाते हैं, तो चुनाव में उनको लाना हमारे लिए आवश्यक है और हम लाएंगे, लाने वाले हैं। चुनाव कोई भी हो हम लाएंगे, किस प्रकार से लाएंगे, कितने पहनामे पे लाएंगे वो बात अलग है। जैसा सुप्रिया सुले के पास शरद पवार छोड़ के दूसरा नाम ही नहीं है, शरद पवार, अजित पवार, सुप्रिया सुले, बात खत्म, पवार फैमिली इज ओवर। हमारे पास अमित शाह जी को आप भूल गए, राजनाथ सिंह जी को आप भूल गए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पुरुष नितिन गडकरी जी को आप भूल गए, योगी आदित्यनाथ जी को आप याद नहीं रखते हो, आप शिवराज चौहान जी को भूल गए। हमारे पास तो हजारों लोग हैं और सिर्फ विकास 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 ये हमारा एजेंडा है। और विकास करते समय सबका साथ, ये मोदी जी का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीत कर करना है। छोटा सा छोटा फेरी वाला भी हो, उसका भी विश्वास जीतना है और सबका प्रयास होना चाहिए, तो ये यशस्वी होगा। बालचंद्र जी, आई कम टू गॉडफ्री। गॉडफ्री, आपने प्रधानमंत्री आवास हर सर पर एक छत होगा, यह प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, मगर गॉडफ्री जी आप गाउठन का इश्यूज लेके बहुत आपने आगे मुहिम चलाया था गाउठन में, और फेल्ड एसआरए प्रोजेक्ट्स और रीडेवलपमेंट स्टॉल्ड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। गॉडफ्री जी इसमें थोड़ा बयान कीजिए, बिकॉज ये मोदी जी का भी सपना है कि आवाज होना चाहिए, हाउसिंग इज द मोस्ट प्रायोरिटी। देवेंद्र फडणवीस जी जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि फास्ट पेस हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर द पुअर, बट गॉडफ्री जी आप इस चीज को हाईलाइट कर रहे थे कि रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बहुत स्टॉल हो गया है, गाउठन में काम बहुत स्टॉल हो गया है, इस पर जरा ध्यान केंद्रित कीजिए। सर, गाउठन और ये अपने जो कोलीवाड़े है, आदिवासी पाड़े है, बहुतांश इनको स्लम का टैग लगाया गया था। 2016 के जो डेवलपमेंट प्लान हुआ था मुंबई का, उस वक्त हमने इसके बाद काफी आंदोलन छेड़ने के बाद में इसको 2017 के रिवाइज डेवलपमेंट प्लान में सुधारने की गई। मुंबई में 189 गाउठन्स है और अबाउट लगभग 40 के ऊपर कोलीवाड़े है। आज तक मेजॉरिटी ऑफ दी गाउठन्स और कोलीवाड़ा का सीमांकन किया नहीं गया है। इसकी नियमावली जो करनी चाहिए थी वो आज तक फाइनल नहीं हुई है। जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है मुंबई में, ऑल डेवलपमेंट इज डेवलपर सेंट्रिक। आम आदमी जो गाउठन, कोलीवाड़ा, आदिवासी पाड़े में रहते, आज तक कोई भी सरकार ने इनके लिए कुछ भी सोचा नहीं। अभी आता हूं मैं सर, जो फ्लैट बायर्स है मुंबई के और जो एमएमआर रीजन में जो फ्लैट बायर्स है, 2016 में मोदी सरकार ने जो रेरा जो कानून पारित किया और 2017 से जो उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, आज भी महाराष्ट्र में जो रेरा का जो अथॉरिटी है सर, वहां पे सिर्फ 2 जजेस है और इतने केसेस है कि एक साल केसेस आने में लगते हैं। जो कानून में प्रावधान है कि 60 डेज में फ्लैट परचेसर का निवाड़ा होना चाहिए, आज तक ये नहीं हो रहा है। तो मेरे को जो स्टेट गवर्नमेंट से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा ये जो जजेस है इसके ऊपर नियुक्त किए जाए ताकि फ्लैट बायर्स को कुछ दिलासा मिले। आज मुंबई एमएमआर रीजन में सर लाख के करीब स्टॉल प्रोजेक्ट्स है और मैं इसके अंदर कम से कम 800,000 केसेस में खुद लड़ रहा हूँ। एक 1.5 साल केस नहीं आती। तो जो ये जो जिसने फ्लैट परचेसर ने जिसके अंदर पैसा निवेश किया, जो मतलब हताश हो गए। एक बंदा अभी जो आया कल के मिड डे में स्टोरी आ रही है सर कि he has gone to the extent of threatening to commit suicide. That is the status of frustration now the flat purchasers have reached. This is the highest, I think so.
the Maharera has to take something concrete decision, and the government also has to appoint some additional judges so that the sufferings of the common flat purchasers are elevated and they get justice. बालचंद्र जी, आप तो बीएमसी में थे और बहुत सारे चीज इसको अटेंड किए, ये एक बहुत बड़ा विषय है, आपको कैसा लग रहा है हाउ द बीजेपी एकनाथ शिंदे सेना टुगेदर गोइंग टू हैंडल दिस, कैसे हैंडल करेंगे इसको, एक बहुत बड़ा विषय है ये. I fully agree with Mr. Godfrey what he said about Gauthan, Kolivada and Adivasi Pada. As far as Adivasi Pada is concerned, it's a forest land. So some forest acts are there, rules, regulations are there. So we have to take a way out from that. And Kolivada and Gauthan roads are very narrow. Houses are quite old. People are resisting for some kind of development. Some SRA projects have entered in from the back door. That is due to corruption of previous government. But what I feel, a new guideline, a policy, separate policy has to be formulated because they are also affected. Kolivadas and Gauthan are also affected by CRZ at some places. Now new CRZ regulations are there with us. So now this CRZ problem at least will be sorted out. But new guidelines will be required and on which this government is working. And Mr. Godfrey, I will definitely convey this to UD Minister, Mr. Eknath Shinde ji, as well as to Devendra Fadnavis ji, that we have to come out with new rules and regulations in DCPR 2034 to take care of Gauthan, to take care of all these Kolivadas and Adivasi Padas. So they will also get some development and developed good habitable house. बालचंद्र जी, एक बहुत बड़ा इशू है क्या मैं ये है कि मुंबई महाराष्ट्र फास्ट पेस ऑफ डेवलपमेंट है, आप बुलेट ट्रेन है, 14 मेट्रो लाइंस है, जेम एंड ज्वेलरी पार्क, वेरियस इंस्टीट्यूशन, सब जगह टोटली खुला हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न्ड, बट रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन हैज टू मैच. हमारे पास बहुत सारे इश्यूज आए थे जहां 7 है, मेट्रो 7 है, में रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन में देर हो रहा है. 2 महीने में उनको रिहेबिलिटेशन रिलीफ प्रॉमिस किया गया था, अभी 7 से 8 महीने हो गए, वो हुआ नहीं है. तो देवेंद्र फडणवीस जी ने गए बार ब्यूरोक्रेसी को वार्न किया था कि आइदर यू टो द लाइन और फॉल बाय द वे साइड. आई डोंट वांट यू डिलेइंग प्रोजेक्ट्स बिकॉज अगर लोगों को घर नहीं मिल रहा है तो इट रिफ्लेक्ट्स बैडली ऑन द गवर्नमेंट. भले कितना भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर मूव करो, हर चीज, सुपर हाईवेज आएंगे, बुलेट ट्रेन आएंगे, मेट्रो लाइंस आएंगे, हॉस्पिटल्स आएंगे, बट गरीब से गरीब लोगों को अगर वंचित करेंगे अपने घर से, ऑन अननोन टू एकनाथ शिंदे एंड देव फडणवीस, तो bureaucracy has to move at the same pace where development the ministries are concerned. यहां पर थोड़ा slackness देख रहे हैं हम लोग. 2-3 जगह हमने देखा कि रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन में थोड़ा वक्त लग रहा है, तो इसको कैसे मैच करोगे? बिकॉज डेवलपमेंट हो रहा है बट गरीबों को वंचित नहीं होना चाहिए. So what you say, I fully agree. Wherever projects are there, people are given alternate accommodations or monetary compensation, but people are not happy with the monetary compensation they get. Now they are getting as per ready regular rate, and that happens to be a small amount to purchase another house or another slum or jhopada in nearby area. So people are reluctant. They are getting houses, but if they are thrown in Mahul, that was exactly done yes earlier, then people are not really willing to go there. So they want nearby, and all these problems are there. But I personally feel that this government has done the policy of earlier 2001 and now the policy of 2011. Any house which has proofs of 2011 also will be qualified for alternate house at the cost of construction. So we don't want to dishouse anybody. Everybody affected in the project should be rehabilitated. However, the implementing agency is municipal corporation. Again, 25 years of Shiv Sena comes in picture, which will not happen now. बालचंद्र जी, इलेक्शन के ब्यूगल आज पॉलिटिकल पंडित्स के हिसाब से हो गया है. आम आदमी पार्टी एक जबरदस्त ये लेके आया है कि हम आपको 200 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, स्कूल्स को बेहतर बनाएंगे, 1000 स्कूल हम बनाने वाले हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स हम बनाने वाले हैं, पानी फ्री मिलेगा आपको, वुमेन ट्रैवल इन बीएसटी वो फ्री होगा.
ये आप कैसे मैच कर पाएंगे? कैसे मैच कर पाएंगे बालचंद्र We जी? are not going to match this. We don't want to match freebies. We don't want to win election on freebies. We want people to be there where they want to be, they should be. We will take the city to the stage where the city should be. City should not be paralyzed because of freebies. So free water, free electricity are gimmicks which will ultimately collapse the financial condition of the corporation or the state. So our agenda is not freebie. Our agenda is only freebie. Our agenda is development. And because of development, new employment will be generated, new things will come up, and the developed Mumbai city will accommodate more people. Development will have housing, development will have good infrastructure, development will have good central business districts, good employment available in the Mumbai city. Godfrey, I want to ask you the same question. Will this have an impact on the BMC election? जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी क्या कि हमने 200 यूनिट फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, हम स्कूल्स 1000 स्कूल बनाएंगे, पब्लिक स्कूल्स में हम लोग और जो गवर्नमेंट बीएमसी स्कूल्स है उसमें और लोगों बच्चों को लेके आएंगे, शिक्षण एकदम हाई लेवल का होगा. क्या ये इम्पैक्ट कर सकता है गॉडफ्री द बीएमसी इलेक्शंस? Yes, it can. I think No, so, but I because, cannot comment because- on behalf of Aap party. But as far as these freebies are there, let me tell you one thing. Our slogan is Sabka Vikas or Sabka Vishwas. So BJP is not only getting confidence of all factors of the society, and then whether Aap will get it or not, the corporation election will decide it. अच्छा, Godfrey Pimenta, I want to ask you the same question. Is this freebies going to dictate terms in the elections? Which way the votes are going to go? Development plank is BJP. BJP is going for development plan. And Aam Aadmi Party is come with freebies. आपको क्या लगता है, Godfrey Pimenta? Sir, to some extent, yet it might influence, because you must have seen the Delhi model where they have come out with number of such schemes, and I think so they were able to capture. But I don't know how the Mumbaikars will see this, because there are pros and cons in the both kind of election models. I do not wish to comment on that. As a Mumbaikars, what we are seeing, that we want an orderly development of the city, good infrastructure. Today, what is happening, for your instance, this SRA scheme, free housing for all, free housing, 225, then it went to 269, now 300. Every year the areas goes on increasing. Today the slums have gone vertical up to 4 to 5, this thing. The population which is saturated in 417 square kilometers, sir. Every square kilometers, the density population of Mumbai is highest in the world. And therefore, it is not able to match the kind of civic infrastructure which is needed. What is needed is the orderly development. Today we are tolerating anything and everything in this city. So that there has to be some limit to which the city can take this kind of a load on such a small compact area of 417 square kilometers. So there has to be an orderly development. There are satellite towns like Navi Mumbai, Thane, Mira Bhayandar, etc., Vasai, Virar, which have in the recent time developed in the orderly manner, good infrastructure, good roads, everything has come up. But the kind of life which we are living in Mumbaikars is become a harass lot. People are now in fact thinking of switching from city like Mumbai to rural areas to have a peaceful life. That is what we are. I have grown in Mumbai as a Mumbaikar for last 60 years, and I know how the civic life has collapsed in the city. We need those achhe din, and I hope my friend now who gets this 40,000 crore investment in Mumbai will to some extent improve the quality of life. And that is what we are looking at: more open spaces, more gardens, more civic amenities, so that people are able to live a happy, a good life in Mumbai. We're coming to the end of the program. Balchandra ji, the final word from you. 40,000 crore
क्या मुंबई महाराष्ट्र का काया पलट कर देगा? क्या मुंबई के मुंबईकर्स के लिविंग स्टैंडर्ड्स इंक्रीज होंगे? कंडीशंस ऑफ वर्क, कंडीशंस ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा? Is Mumbai going to benefit, and is Mumbai going to have an impact where BJP comes back to power in the BMC? Balchandra ji, final word. 40,000 करोड़ से मुंबई में सुधार आएगा, बदलाव आएगा, इंप्रूवमेंट होगा, काया पलट नहीं होगा। काया पलट नहीं होगा। काया पलट के लिए बहुत बड़ा बैकलॉग है, बहुत बड़ा बैकलॉग है। ब्यूटिफिकेशन के 1750 करोड़ के आज जो प्रोजेक्ट चालू है, टॉयलेट्स 1000 टॉयलेट्स बना रहे हैं, 1000 टॉयलेट प्लेसेस। सो lot more money is required which will be spent in मुंबई। और हमारा स्लोगन ही है निर्धार सरकारचा। निर्धार मीन्स इट इज कमिटमेंट ऑफ द गव्हर्नमेंट। काया पालट मुंबईचा, मुंबईचा काया पालट होणार। 40,000 करोड मध्ये नाही, आणखीन लागणार त्याला पैसे ते देणार आणि मुंबईचा काया पालट एकनाथ शिंदे फडणवीस सरकार करणार। Final word from you, Godfrey. 40,000 crores, will it facelift Mumbai, infrastructural problems coming to an end, and do you see BJP coming back to BMC, taking on BMC? Ultimately, it is for the people to decide, and I have no comments to make on that. It is ultimately the call of the ordinary Mumbaiker. Ultimately, it is people's choice. It is a democracy. In a democracy, whichever party does good work has to win the election. Thank you, Balchandra ji. Thank you, Shirshad ji. Thank you, Godfrey Pimentel, for being on the show. Thank you so much. We'll come with more discussions, more participation from you. Thank you. Thank you. That was Balchandra ji and that was Godfrey Pimentel. उन्होंने अपने सोच समझ रखे हैं about how Mumbai is going to benefit from 40,000 crores investment coming directly from the Prime Minister, and the Prime Minister's zeal to see that how Mumbai and Maharashtra takes on and be one of the best cities not only in India but पूरे international city of repute बन जाए. That's great work. But तीनों को जिस प्रकार से energy synergization हो रहा था, Prime Minister Modi, Chief Minister Eknath Shinde, and Deputy Chief Minister Dev Fadnavis. That was fascinating for Mumbai. And जो लोगों को involvement थे, आज जिस प्रकार से पूरे BKC भरा हुआ था, लोगों के जो अपेक्षाएं, the thought that something really is going to happen, and BMC elections के जिस प्रकार से BJP कार्यकर्ता में उत्साह आ गए कि yes, we see a ray of hope, we are going to take over the BMC. BMC में BJP और एकनाथ शिंदे जी के झंडे लहराएगा, ये एक जबरदस्त एक तौर. But as you say, our constitution says we the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity. The government and the people, the poor and downtrodden, has to be taken into confidence. They have to be, and as to the जो hawkers और गरीब के लिए जो loan facilities Prime Minister ने announce किया, is a great move forward to see the 4 pillars of our constitutions are in fact intact: justice, equality, liberty and fraternity. That's all from Pradeep Nambiar. Nation Now. We'll come again tomorrow with more issues that affect Mumbai, Maharashtra and India. That's all from now. Good night.